हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। इसके पहले भी हमने और भी लेसन्स डाले हैं और भी चैप्टर्स की वीडियोस डाले हैं। आई होप आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको यहाँ से जाके लिंक से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं। और अगर आपने देखा है तो आई होप आपको वो चीज़ें पसंद आई होंगी। तो चलिए आज की क्लास में हम इसके हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन और ढेर सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको ऐसे फर्दर जो भी क्वेश्चंस मिले आप उसको कॉन्फिडेंटली एंड इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। व्हाट वी विल कवर टुडे? व्हाट बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंसुरेशन। देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट perimeter of different shapes like triangle, rectangle, square, polygon, closed shapes, any shapes. Okay, so we will understand how to take out the perimeter of these shapes. Then we will understand about the area, then of area of a square, rectangle, triangle and its types, irregular shapes and everything. Okay, so make sure you like this video and subscribe to our channel. Hit the bell icon so that you never miss any video update about any further thing. Okay, so let us start with mensuration. Basically, what is mensuration? It is a branch of mathematics that deals with the measurement of length, area or volume of the geometric shapes. हमने geometry पढ़ा था अभी कुछ समय पहले. So that was the branch of mathematics that was dealing with the shapes, the angles and everything, how to measure it and how to make them, all of that. So mensuration is the branch of mathematics that deals with the measurement of length, area or volume of various geometric shapes. Okay, so these are the geometric shapes. It can be anything. कोई भी हम लोग क्या पढ़े थे कोई geometric shape के बारे में? कोई भी क्लोज शेप्स आपके क्या होते हैं? ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, क्लोज्ड होने चाहिए, चाहे वो कितनी भी लाइन सेगमेंट्स से बने हो. इट कैन बी अ स्टार, इट कैन बी एनी रैंडम शेप लाइक दिस, द एरो, द ट्री वन एंड एवरीथिंग. बट बेसिक थिंग क्या है कि ये सारे के सारे आपके क्लोज शेप्स हैं. ये सब कोई एरिया कवर करते हैं, ये सब का कोई एक measurement है. तो how to measure the length, the area, the volume of these various geometric shape is the method that we learn in the branch called mensuration. चलिए देखते हैं perimeter पहले. तो perimeter क्या होता है? The total length or the distance covered along the boundary of a closed shape. कोई एक closed shape है, suppose this, तो the total length of the boundary or the total distance covered along the boundary of the shape is the perimeter of the shape. कोई भी shape का perimeter हो सकता है. basically उसकी हम length, उसकी boundary की हम length कैसे add करें, कैसे उसको calculate करें, total length, that is the perimeter. perimeter of a circle is circumference. बाकी shape के तो हम उसको perimeter of the shape बोलेंगे. बट फॉर अ सर्कल द पेरीमीटर इज इट्स सर्कमफेरेंस, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज शेप. सो वी हैव अ शेप हियर, रैंडम शेप ABCD, एंड द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज शेप इज द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स टुगेदर. पेरीमीटर किसी भी क्लोज शेप का क्या होता है? इट्स सम ऑफ इट्स साइड्स. उसके साइड्स का सम, लाइक ABCD हियर इट इज अ shape. So the perimeter will be AB plus BC plus CD plus DA. So this is the shape perimeter. Perimeter of the shape क्या है? The sum of the length of all of its sides. Okay. तो यहाँ पे क्या है? 7 plus 8 plus 3 plus 5. So we will get our answer by adding all of these. लेकिन अब यहाँ पे यूनिट की बात आती है. तो यूनिट यहाँ पे क्या है? आपको क्या दिख रहा है? 7 यूनिट्स, 5 यूनिट्स. सो हियर फॉर दिस एग्जांपल, तो इसका यूनिट क्या है? यूनिट में ही रहेगा, इतने यूनिट्स यू विल गेट. एंड अगर कभी
mostly we calculate the length in meter, centimeter, millimeter. So the unit of the perimeter will be depending upon that कि हमको वो कितनी measurement में दिया है centimeters में, तो the unit of the perimeter will be centimeter, meter, millimeter, similar. Okay, so we have this added up and we got 23 units as the perimeter of the shape. Clear है किसी भी टाइप के शेप का perimeter निकालना. अब आते हैं हम perimeter of a triangle के ऊपर. तो perimeter of a triangle is the sum of all of its sides together. उसकी सारी sides का sum. सिमिलर है जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी लास्ट स्लाइड पे कि हाउ टू टेक अ perimeter of a shape. ए शेप का perimeter is equal to sum of all of its sides. So triangle का भी वही कह रहा है, sum of all of its sides. Suppose this triangle has a side A, B, C centimeters. So the perimeter will be A plus B plus C. In the case कि ये तीनों अलग अलग है, अलग अलग होंगे तो क्या कहलाएंगे? Scalene triangle कहलाएंगे. Or if all the sides are different in measurement of a triangle, then the triangle is scalene triangle. So A plus B plus C is the perimeter of a scalene triangle. अगर ये equilateral triangle होते यानी all sides are same, आपको कोई एक साइड दी होती, कहा होता this is an equilateral triangle. So उसमें क्या होता, उस एक साइड में यानी कि A भी B के बराबर, B भी C के बराबर, तो A is equal to B is equal to C. तो A plus B plus C को हम ऐसे लिख सकते हैं A plus A plus A, right? If A, B and C have the same value of A, then it is can be written as A plus A plus A, that is 1, 2, 3. So it is 3 times A units. The unit will be same. The perimeter of equilateral triangle क्या हो गया? 3 into A. Scalene triangle क्या था? Sum of all of its sides A plus B plus C units. Perimeter of equilateral triangle 3 into A units. Isosceles triangle, that is A is equal to C. ये दोनों इक्वल है एंड B इज डिफरेंट. आइसोसेलेस तो यही होता है, टू साइड्स आर सेम, एनी टू साइड्स, इट कुड बी A B, बट हियर लेट अस टेक A and C आर सेम, दैट इज A is equal to C and B is another, so it can be written as 2A plus B. So it is done. You have the all three triangles का perimeter. Scalene का all three sides are different, so add it up. One side is given and it is said equilateral triangle, so you can simply do 3 into that side. Okay. Isosceles triangle, one side are given as the two sides are same and then one side is extra given, so you have to just take out the 2 into that given isosceles side plus the third side. Simple. Now let us understand the perimeter of rectangle. It is the sum of all of its sides together again. Perimeter तो वही होता है. So we have ABCD rectangle with the L and W as the two sides. So we know कि AB is equal to DC and BC is equal to AD. That is, this is also L, this is also L. So perimeter will be L plus W plus L plus W. ऐसा ही होगा. अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है कि there are 2 times L and 2 times W. You can write it as 2L plus 2W again. लेकिन अभी भी इसमें हमको कुछ कॉमन दिख रहा है कि हम इसमें से 2 पिक आउट कर सकते हैं. We can just place 2 outside and then bring a bracket in and add the 2 sides L plus W, the 2 different sides. Add them, the length plus breadth whole into 2 is the perimeter of rectangle. Perimeter of a square. So square, you know, square is the rectangle, a polygon that has all the sides as same. That is, suppose it is a side, then all sides are equal to A only. Okay. So that is, you can write it as A plus A plus A plus A units for 4 times. But it is 4 times only A. So you can just simply write 4 times A. That is 4 times into side units. Okay. For any other polygon that has different sides and all sides are given, then you have something like this. Suppose we have a shape of 5 sides and
you are given the each side. So what will be the perimeter? हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था एनी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स. तो इसमें भी क्या होगा, ऑल ऑफ द साइड्स आर गिवन, जस्ट सिंपली ऐड ऑल द साइड्स, यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द शेप ऑफ द पॉलीगॉन. ओके, ऐसे ही आपका भी आया होगा. अभी ये देखते हैं कि ये लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी हमने पेंटागन पढ़ा, इसमें भी पेंटागन है. उसके पेंटागन में क्या था, ऑल साइड्स वर डिफरेंट, दे आर गिवन, एंड दिस इज द रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर मतलब ऑल साइड्स आर सेम. All sides are same, then the polygon is a regular polygon. Suppose it is said it is a regular pentagon and with the side of S units. तो S units का एक regular pentagon है. Pentagon means it has 5 sides. Okay. एक side की आपको length दी है S units. So how we will take the perimeter? The length of side into the number of sides. Here N is the number of sides of the polygon. Okay. So it is S into N. That is, suppose N यहाँ पे क्या है 5, तो it is 5S units. Okay. चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं. We are given this shape. हमको पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर कैसे निकलेगा? पेरीमीटर will be the sum of the sides. साइड्स के कितनी साइड्स हैं? There are 4 sides. उनके मेजर्स कितने कितने हैं? 2 + 1 + 4 + 5 सेंटीमीटर. आंसर आपका उसको ऐड करने पे आ गया. We got the perimeter of this shape. Next, have all sides 4. How many sides are there? 1, 2, 3, 4, 5. Then simply 5 into 4, that is 20 centimeter. I hope आपको easy हुआ होगा, कैसे आप solve करके निकाल सकते हो. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. So again we have a shape. You can say it is an irregular shape. It has no given like particular polygon or anything. It is a mixture of all. So but we have all the sides are given, 2.5, 2.5, 0.5, 0.5. So what we will do, how to take out the perimeter? Yes, sum of all sides. So just add all the numbers over given here. You got the perimeter of 15 centimeter. Similar this case is given a more bigger shape of more sides. Each side is given, you can see. So just simply add all those numbers, you will get your perimeter of the shape. The lid of a rectangular box of side 40 cm by 10 cm is sealed around with a tape. What is the length of tape required? आपको क्या है, एक बता रहा है कि एक लेंथ रेक्टेंगुलर बॉक्स है 40 by 10 सेंटीमीटर का, उसका लिड है. ओके, तो इट इज सील्ड अराउंड द टेप. उसको सील किया गया, उस लिड को सील किया है. लिड इज लाइक रेक्टेंगल हियर, दिस इज अ रेक्टेंगल. लिड को ऑल अराउंड मतलब उसके एजेस पे यानी उसके साइड्स पे टेप लगाए गए हैं. तो कितने टेप, कितना मीटर टेप, कितना सेंटीमीटर टेप यूज हुआ होगा, यही पूछ रहा है. उसके लिए क्या करोगे, यू विल हैव अ रेक्टेंगुलर हियर. सो इसके बाउंड्री पे, बाउंड्री यानी पेरीमीटर, so you will take out the perimeter of the shape. The length of tape is equal to perimeter of the rectangle. What is the perimeter of rectangle? Yes, 2L plus B. Here put the values, 2 into bracket 4 in plus 10. You got 50. So you got 100 centimeter. 100 centimeter is the length of tape required. Next, a rectangular piece of land measures 0.7 km by 0.5 km. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. What is the length of wire needed? हमें क्या दिया है, एक rectangular piece of land का measurement दिया है. Each side is to be fenced with 4 rows. एक साइड पे 4 rows of wire लगेंगे. हमको कितना length of wire needed है? For that you have to take out the perimeter of the land first. Okay, so what is the perimeter of land? Yes, the perimeter of land is equal to the perimeter of rectangle, that is 2L plus B. You got 2 into 0.7 plus 0.5. Correct. You got 2.4 centimeter. So each side is to be fenced with 4 rows. 2.4 kilometer. So each side is to be fenced with
4 rows, and for that 4 rows is equal to 4 into 2.4 kilometer, and you got 9.6 kilometer as your answer. So this is the total length of wire needed. Next, find the perimeter of each of the following shape. A triangle of sides, three different given sides है ना यहाँ पे 3, 4 and 5. तो इसका मतलब ये scalene triangle है. तो इसका आपका perimeter will be the sum of all of its sides is 12 centimeter. Equilateral side of 9 centimeter. Equilateral triangle है. Equilateral triangle यानी each side is equal. Each side is 9 centimeter. You can simply add 3 times 9 or just do 3 into 9. That is 27 centimeter. Okay. Next is isosceles triangle with equal side of 8 centimeter each, and the third side is 6 centimeter. So it is 8 plus 8 plus 6. That is 22 centimeter. Easily हो गया. Triangle भी समझ में आया, rectangle भी समझ में आया. A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each of the side if string is used to form a square? This means आपको बताया कि एक स्ट्रिंग का लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर. अभी मुझे उसी गिवन स्ट्रिंग से एक अलग अलग शेप्स फॉर्म करने. पहले हमें एक स्क्वायर फॉर्म करना है. स्क्वायर फॉर्म करेंगे यानी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन इज 30 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 into a. 4 into side is equal to 30 centimeter. So side is equal to 30 by 4, which means 7.5 centimeter. 7.5 centimeter is the length of each side of the square that is made by the 30 centimeter long string. Next is equilateral triangle. Equilateral triangle, yani all sides will be equal. That is 3 into a is equal to 30 centimeter. Then side is equal to 30 by 3, that is 10 centimeter. Simply निकला आपका एक रेगुलर हेक्सागन. अगर उसी से रेगुलर हेक्सागन बनता तो रेगुलर हेक्सागन मीन्स 6 साइड पॉलीगॉन, 6 साइड इक्वल साइड पॉलीगॉन रेगुलर. तो इस वजह से we get 6 into side is equal to 30 centimeter. The perimeter of regular hexagon is 6 into side. 6 into side is equal to 30 centimeter. तो 30 centimeter divided by 6 is equal to the side का measurement, that is 5 centimeter. आ गया आपका रेगुलर हेक्सागन का साइज. क्लियर है कैसे किया हम लोगों ने ये? ऐसे क्वेश्चंस भी अब आपके लिए इजी हो गए. आप इजीली उन सबको सॉल्व कर सकते हो. नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्क विथ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 per meter. हमें क्या करना है? हमें फेंसिंग का एक स्क्वायर पार्क के फेंसिंग का कॉस्ट पता करना है, जब हमें यहाँ पे गिवन रेट भी है और एक साइड का मेजरमेंट भी. साइड मतलब फेंसिंग कहाँ होगी? बाउंड्री पे होगी. तो बाउंड्री यानी कि द गिवन शेप का पेरीमीटर. तो पेरीमीटर निकालना ऑफ अ स्क्वायर. दिस इज स्क्वायर पार्क. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालने के लिए 4 into द साइड्स, दैट इज 4 into 250 मीटर. वी गॉट 1000 मीटर एज आवर आंसर, as our perimeter. Then the cost of per meter fencing is 20 rupees. So 1000 meter की आपकी हो जाएगी 20 into 1000, that is 20,000 rupees. So the cost of fencing is 20,000 rupees. Sweetie runs around a square park of side 75 meter. Bull runs around a rectangular park of side length 60 and breadth 45 meter. Who covers less distance? आपको दोनों के क्या करने होंगे? आपको दोनों के पेरीमीटर निकालने हैं, है ना? तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया? 4 into 75 and you got it as 300 मीटर. और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो गया? 60 plus 45 whole into 2, 12 plus b. You got 2 into 105, that is 210 meter. So who cover less distance? Bulbul
cover less distance than sweetie. क्लियर कैसे निकला? चलिए अब बात करते हैं एरिया की. एरिया क्या होती है? एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस enclosed by a closed figure. That is area. That is, इसके बीच में this shaded part, this colored part is the total area of the square rectangle. Similarly, the start का area, the amount of surface that is covered by a closed figure is called the area. Perimeter क्या था? Boundary, length of boundary, and area is the surface covered. Okay. तो चलिए शुरू करते हैं विद दी स्क्वायर. स्क्वायर का आप जानते ही हो, साइड सारी इक्वल होती है. और ये जो मेजरमेंट है इसको कैसे निकालेंगे? दैट इज वी विल यूज साइड इनटू साइड. दैट एक साइड से दूसरी साइड को इनटू करेंगे तो वी गेट दी कवर्ड रिक्वायर्ड एरिया. दैट इज a side into 2, that is side to the power 2. You will write it as side to the power 2, that is a to the power 2, where a is the length of each of the side. यूनिट इसका क्या होता है? किसी भी एरिया के शेप का यूनिट टू द पावर 2. और यू कैन राइट स्क्वायर यूनिट और यू कैन राइट यूनिट टू द पावर 2. यूनिट स्क्वायर be centimeter, meter square, kilometer square, in this way. Area of rectangle, you have L and W or L and B as the two sides of the rectangle. Then area is equal to length into breadth. Unit square. Okay. Area of triangle. Triangle निकालने के लिए you need a base, length and the height length. एक हाइट का और बेस का आपको मेजरमेंट जरूरी है किसी भी ट्रायंगल में. इक्विलैटरल में वो इनसाइड में ही आपको मिल गया. आइसोसेलेस में वो जो दीज आर टू आइसोसेलेस साइड एंड दिस इज दी थर्ड साइड. तो थर्ड साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अपोजिट वर्टेक्स पे तो यू गेट दी हाइट का मेजरमेंट. दिस लाइन विल बी हाइट ऑफ द ट्रायंगल. एंड ऑब्ट्यूज और स्केलन ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं? यू गेट अ हाइट आउटसाइड, लेकिन ब्रेड्थ आपका यहीं तक है. बेस विल बी हियर ओनली, हाइट विल बी फ्रॉम द टॉप वर्टेक्स टू द imaginary line of the base. Here this is the height and this is the base. Okay, so area कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप, इरेगुलर शेप. देखिए इरेगुलर शेप की एरिया सपोज ये है, इसको आपको रेगुलर शेप्स में डिवाइड करके उनकी अलग अलग एरिया निकालनी है. सपोज कैन बी डिवाइडेड लाइक दिस. This is a triangle, this is a square. So take out the area of a square plus take out the area of this triangle and add it up. So you get the area of the irregular shape. Okay. Find the area individually and then add them. The sum will be the total area of the irregular figure. Clear? चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज की. तो we have these shapes. पहला शेप देखो, इसमें क्या है? ये छोटे छोटे स्क्वायर है ना, तो these are our units only, square units you can say. These one is equal to 1 unit. तो what is the area of this square over here? Area is this shape contains 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So it contains 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it contains 9 equal shapes, 9 equal squares, 9 equal units inside. So it covers, so that is why it covers 9 fully squares. So that is why the area is 9 square units. Okay. Next we have 1 2 3 4 and 5. It cover 5 squares है ना, तो इट्स एरिया इसकी क्या हुई? 5 स्क्वायर यूनिट्स. नाउ अब इसको देखते हैं. 1 2
2, 3, 4. Oh, these two match for 1, these two match for 1. So this have 2 full squares and 4 half squares. 4 half squares can be filled as 2. So it's have 4 full covered squares. So that is why the square area is 4 square units. अब इसका भी आप simply निकाल लो. What you will get? You will get 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 square unit will be the answer. And then इसका we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 square units. We got 10 square units as the area of this shape and 8 square units as area of the shape D. क्लियर है कैसे किया? चलिए अभी देखते हैं अगला हमारा शेप दैट इज हैविंग सम मोर इरेगुलरिटी. तो आप इसके लिए देखो ये डाटा बना सकते हो कि दिस फॉर दिस शेप द नंबर ऑफ एरिया covered area with the full shape square full covered square is 2. तो area is 2 units for that. हाफ तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा. More than half square 6 and less than half is also 6. Okay. These shapes. So this is 1. So that y is 6. So we got our total area as estimate as 2, 6, 2 and 6. ये आपके लेस देन थे तो इसका मेजरमेंट हम नहीं लेंगे. तो ये एस्टिमेट हमारे पास आ जा रहा है 8 स्क्वायर यूनिट लगभग हमारा ये पूरा एरिया में कवर हो रहा है. ओके. सेम इसको देखिए. वी गॉट 5 and 9. 12 आर लेस हाफ बट हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उससे कोई एक पूरा फिल नहीं हो रहा है. तो दैट इज 8 प्लस. सिमिलरली वी गॉट इट. ओके. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is 50 meter long and 300 centimeter. It is given कि area of a rectangular garden is 300 centimeter square, 300 meter square, where the length is 50 meter. Length of the rectangular garden is 50 meter and the area is 300 square meter. We have to find the width of the garden. How we will find? Area of a rectangular क्या होता है? Length into breadth. So width of the rectangle is equal to area upon length, that is 300 by 50. So we got 6 meter as the area of breadth of the rectangular garden. Okay. Next, what is the cost of tiling of a rectangular plot of land with 500 meter long, 200 meter wide? Rate of per 100 square meter is ₹8. तो हमको यहाँ क्या दिया है? We have a area, rectangular area. We have to understand इसको टाइलिंग करने का हमको कितना कॉस्ट आएगा. Tiling will be done in the area of the rectangle. So take out first the area of the rectangle, that is length into breadth. We got 500 into 200, that is 1 lakh meter square. So आपको क्या मिला? 1 lakh meter square. तो कॉस्ट क्या है इसका? कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ दिस मच हमको कॉस्ट पता है 100 पर 100 स्क्वायर मीटर का. तो 1 lakh meter square will be 8 into 1 lakh divided by 100. That is 8,000 rupees. Clear? Next, a room is a 4 meter long, 3 meters and 50 centimeter wide. How many square meter of carpet are needed to cover the floor of the room? So given is 4 meter and width is 3.5 meter. Area is equal to 4 into 3 into 5. So 4 into 3.5 is equal to 14 meter square.
14 मीटर स्क्वायर हमारी उस गिवन रूम की एरिया है, तो 14 मीटर स्क्वायर का ही हमको carpet चाहिए होगा to cover the whole area. And next question is, we have a floor of 5 meter and 4 meter and the square carpet of a side 3 meter is laid on the floor. So what is the area that is not carpeted? मतलब जिस पे carpet नहीं है, outside that. So take out first the area of the floor, L into B, we got 20 meter square. Area of carpet, that is 3 into 3. 3 into 3 is equal to 9 meter square. So the area that is not carpeted is equal to the area of floor minus area of carpet. That is 20 minus 9, that is 11 meter square. Simple है, clearly हो गया आपका. I hope आपको ये सब समझ आ रहा होगा, easy पड़ रहा होगा, आप धीरे धीरे करना. So now we have different irregular closed shapes. So इनकी area निकालने के लिए what you will do? You will just divide it into regular shapes. Like this can be a rectangle over here and this can be a rectangle over here. So we have 8 units. This is 10 units. This was 10 unit, but this is 12 units. And this is again 2. So this is whole is 12. This is 2. तो इसका आपका rectangle का क्या निकला? 12 into 2, that is 24. This one. और इसका rectangle का आपका क्या निकला? 8. We have 8 here, na? 8 into 2. 8 into 2, that is 16. So the whole area covered is 24 plus 16 square unit. That is 40 square units. Clear? कैसे निकाला? Same, आप इसको भी अलग अलग स्क्वायर में डिवाइड कर दो. We have 1, 2, 3, 4, 5. एक स्क्वायर का एरिया कितना निकला? 7 into 7, that is 49 square unit. So 1, 2, 3, 4, 5. Each has same area. So 5 into 49. That will be 245 square unit. कैसे निकाला समझ आया? इसको भी आप सेम 2 रेक्टेंगल्स को ऐड करके निकाल सकते हो. चलिए, तो इसी के साथ हमने आज ये अपनी चैप्टर कंप्लीट की. जाना कि कैसे एरिया, पेरीमीटर एंड एवरीथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड इट, ये सब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इस पे हम बेस्ड है डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स की. आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. और ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करिए. और अपने इस फ्रेंड्स से और अपने चैनल से भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप फर्दर वीडियो आए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए.